Western rather than Western. Um, but that, as a young monk, that was just something at the back of my mind and not something I gave a great deal of uh, thought to. Now and again, talking to teachers and talking to pupils, but then when I left Wat Nanachat, and my idea is like a good life. You want to have time for yourself and time for public or for other people, and it has to be, you know, really quite clear in your mind. There's something tangible. Because I have great faith, just living as a monk, is a good thing for the society at large. You're contributing just by living your life as a bhikkhu. So I have that faith. But at the same time, I wanted to contribute something more tangible to Thai society in particular. And having left Wat Nanachat and no longer having all the administration and all these things that abbots have to do, then I had time that I could now devote to these educational projects. And um, in particular, this connection that I had with a kindergarten school and a primary school in Bangkok called Tosi, where the head teacher, so a student of mine, and she would come kind of disillusioned at the kind of education that she could provide to the kids, and was really inspired to try to come up with a Buddhist model for a kindergarten, and so that was how we got um, working on that, and particularly working on you know basic underlying principles rather than the details of curriculum. And we've been developing, that's been going like for 30 years now, 25, 30. So make quite a lot of progress, I think. I mean, the school has problems. Now in the last 10, 20 years, the government has opened up the education to international schools, and in fact, they get a subsidies. So there's a huge movement of kids into international schools in Bangkok now, where kids are speaking English from a young age, and often not really even wanting to speak Thai. And I think that's such a dangerous path for a society to follow, where you have majority of people who don't speak English, and you're lead to speak, almost like a colonial kind of style. And the these schools are very wealthy, and they can attract the best teachers. So even if you have teachers who are inspired by a Buddhist model, often they're looking after parents, or they have young kids, and they just can't manage it financially. And the schools, like the Torsi school, is like caught between two stools, in that you don't want it to be too kind of um, expensive and elitist, but at the other hand, you need to pay the teachers' wages, so the teachers don't get very high wage, and the school doesn't make a profit; it just breaks even, just basically break even. But now you have these pressures with a declining birth rate, so there are fewer and fewer kids, and a lot of schools are closing around Thailand. There's not enough pupils for schools, and the growth of these very wealthy, well-equipped, Western style international schools. So the turnover of teachers is something that um, makes creating like a culture
in Thailand, and so I'm pretty involved. I mean, in terms of a daily or it's just once a week. I spend the morning there and give a talk and speak with teachers and pupils, but I'm involved in the whole ethos of the school, and if there are problems, and I'm a basic advisor to the school. So one of the things that I've been doing the last couple of years is that I developed this model which depends on a very high level of commitment from both teachers and parents. And that being the case, it's quite clear this would never work in a public school system. You just wouldn't be able to get that amount of commitment from those different groups. And so the idea of creating something on a grassroots level that could then influence a wider education authority, that's sort of a little bit gone by the board. That's not going to happen. But I wanted to perhaps create a curriculum that could be shared with the public school system, the Ministry of Education. And I decided on a thinking skills curriculum, because this is kind of non-Buddhist, but something that, is, the Thai public school system is considered very, very weak, very poor, and the whole idea of an education as something that teaches you how to think, that's not really there in the culture at all. And the idea that thinking skills are embedded in the academic disciplines, that doesn't work out in Thailand. So developed this curriculum, and now it's up and running, and we're just tweaking it, and hopefully within a couple of years it'll be something that we can share with the. So basically there's like a 6-year curriculum, with the first year is called Digital Detective, which is teaching kids, about living social media and navigating online life and using critical thinking skills to protect themselves. And then the second year is questioning skills and study skills, memory skills, these kinds of things. Third year is creative thinking. Fourth year is scientific thinking. Fifth year is informal logic. And sixth year is metacognition. So this is so this is some. So next time you come to Thailand, you want to visit the schools, I'll take you and introduce it. I'm also involved in a school. It's the same group in Chiang Mai, which has adopted most of the major principles of this model I developed, but it's slightly different in that they use the IB, the international, call it, and there's it's more or less an international school, and there are so many expats in Chiang Mai that it's a lot of kids are like a mixed blood, and so the culture is a little bit different, but similar in most ways. So that's one thing. I'm involved in a group, a charitable foundation, which is trying to create a new idea in lay Buddhist circles of planting trees as a way of making merit. So having in coordination with monasteries, usually having tree planting, and people go along and plant trees rather than offer sanghadana in the usual way. And so trying to promote reforestation from grassland, bringing back that sort of love of trees, and getting this idea that when you plant a tree and you look after it, you're making merit, you're doing a good thing. So that's one thing. The other project is
establishing a convalescent home for elderly and sick, because as we have this say crisis of declining birth rate, and in the Sangha it's the same. It's like there's fewer and fewer young people coming into the Sangha. The proportion of elderly monks is increasing all the time. And the Ajahn Chah tradition, I think, looks after its elderly monks probably the best of any group that I know. It's in many ways exemplary. But I think it's not really going to be able to handle the increased number. So I have a piece of land. It's about half an hour drive from where I live, and is quite a big piece of land. And so it's divided into two halves. And on the eastern side, developing like a forest monastery in sort of with Ajahn Chah style. And on the western side, there'll be three phases, and one area is for monks who are recovering from operations or convalescing, but at their monasteries they don't have people who will look after them. So this is a place like for temporary stays to convalesce. And then I want to have an area for monks with dementia, and then a end-of-life care center. So that's something that I have a student of mine who's running that. So I'm not so involved in that sort of day-to-day, but it's another thing. And a few different projects. Yeah. This should I sit over here maybe? Welcome to be more comfortable there. No, this makes no difference. इससे भी दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है, वो शार्प नहीं है। पकड़िए। मैं कहता अकेले है कुछ? It's on the internet. बता देना हमें जब नीचे जाना तो हम छोड़ दें. Thank you. So पूनम या निखिल, आपको माइक्स थोड़े मॉनिटर करने पड़ेंगे. We are getting a lot of the background commentary. Ajahn Saurabh's father has a question in Hindi, so we can take that and then I'll translate that. इससे बोलना पड़ेगा. गुरुजी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? तो इसमें चलो अच्छा वो आप बता दें. ऐसे मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं. जैसे ये भी दूर पास का है सब हमारे में. जो आपके मुझे दर्शन हुए, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं. और मेरा ये पुत्र है सौरभ, एक ही लड़का है मेरे पास. मेरी इच्छा है ताकि ये आपकी शरण में रहे, एक अच्छा इंसान बने, लोग इसको ये समझे भी एक अच्छा इंसान बन चुका है. उसके लिए मेहनत इसको करनी पड़ेगी. आशीर्वाद आप देंगे सभी. और साथ में ये जिन्होंने यहाँ ये आश्रम बनाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. क्योंकि मुझे पता नहीं था. मैंने फोन के माध्यम से गौतम बुद्ध का शुरू से लेके और जो इसमें सीरियल दिखाया गया है, फोन के अंदर जो दिखाया गया है, मैंने उसको
2 से 3 बार रिपीट किया है, क्योंकि एक बार हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सारी बातें हमारे लिए एक अजनबी होती हैं। तो 2-3 बार देखने के बाद कुछ कुछ दिमाग में आया, वे ये सही है, उनको रिपीट किया। और जैसे इसमें बातें आती हैं, दोहे आते हैं, कहानियां आती है, भंते, आनंद, तो उनको सबको शाम को खाना खाने के बाद जैसे सोते ना, तो अपना फोन को अपने कान की तरफ लगा के सो जाते। तो उससे कहानी बहुत लगा के उससे कुछ ना कुछ हमारे को मिलता, दिमाग में शांति मिलती। उससे फिर ये थोड़ा सा मेरे अंदर विराग जाग उठा गौतम बुद्ध की तरफ। और मैं पहली बार ही आपके इस आश्रम में आया हूँ। पहले मैं यमुनानगर गया था, वहां पर स्तूप बना हुआ है, तो वहां एक माली ने मेरे को बताया था भाई आप लोग वहां जाइए। तो यहाँ मेरा एक बिलासपुर में मित्र था, मैंने उससे पूछा था, बेनुले आप वहां जाइए मिस्त्री जी। तो हम जब यहाँ आए तो हमारे को इस लोकेशन ही बहुत अच्छी लगी। तो जब हम यहाँ आए तो हमारी मुलाकात हुई, राम राम हुई, तो फिर मैं इसको सौरभ को फिर दूसरे चक्कर में छोड़ के गया था यहाँ। अच्छा, मैं पहले गुरुजी को इतना बता दूं। So Ajahn, he's conveying much. He's first seeking your blessings for himself and his son Saurabh, who's now been staying in the monastery for the past few weeks, and expressing much gratitude for the existence of a place like this where generally people can train themselves and their minds, and particularly in the context of his son, to enable them to live functional, meaningful lives. So that was one part. Then he gave some background to his own he felt very inspired by the Buddha's teachings when he came across a serial in Hindi, a television series in Hindi on the life of the Buddha, which he described that on his phone he would sort of turn it on and then go to sleep with the whole thing just playing in the background. And the third thing was that he actually didn't know of this place. He went to the stupa just outside Yamunanagar in Chaneti. And there he was informed of the existence of this place. And so that's how he came here and is very grateful for the existence of this monastery. Okay, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, मैंने ये तो बता दिया। तो मेरे लड़के ने बोला था वे बड़े गुरुजी आएंगे, परसों इसने फोन किया था, भाई मैं अवश्य आऊंगा, मैं बिल्कुल दर्शन करूंगा बड़े गुरुजियों के। ठीक है, so it's generally his son then told him of your impending arrival, and so he's come just to seek blessings for himself and his son and express gratitude, anumodana, etc. What one thing would make your life? What one thing would make your life better? आपको क्या एक चीज है जिससे आपकी जिंदगी और बेहतरीन हो सकती है, ऐसे पूछ रहे हैं गुरुजी। अच्छा गुरुजी, जिंदगी तो आपके चरणों में आके शुरुआत तो हो ही गई बेहतर की। अब धीरे धीरे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तो बेहतर हो जाए। He says that coming close to you, his life is already better, and he expects it will continue getting better from here. Okay. Flattering answer. But do you see anything in your life that needs to be changed? आपका जवाब इन्हें बहुत प्यारा लगा और ये पूछ रहे हैं कि आपको अपने जिंदगी में कुछ बदलाव लाना ऐसा महसूस होता है?
बिल्कुल होता है गुरुजी जिंदगी में बदलाव, लेकिन इसमें थोड़ा प्रयास की जरूरत होती है इंसान को करने के लिए। जैसे कि अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस हॉल में जितने भी आदमी बैठे हैं तो सभी एक हॉल में बंद हैं। अब यहाँ और भी अच्छा प्रयास हो सकता है, और शांति के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। एक हमने फोन को तो देख लिया, फोन में तो वही बात चलेगी जो इसके अंदर फीड हो चुकी है। अब आप गुरुजी हमारे सामने हो, हम फोन से तो पूछ नहीं सकते भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब आप हमारे सामने हो, तो बेहतर तो ये है कि आप हमारे सामने हो। So he says that yes, we have to bring change in our life. Now we are all here in the meditation hall, and so we all need to work hard and bring that change in our life. And through the phone, we can only receive what is already recorded. But now that you are here, now we can bring that change in our life. And we can ask questions, and we can ask questions. Okay, thank you. Maybe we can Okay. धन्यवाद कह रहे हैं गुरु जी। अब किसी और Anyone has a question? अगर हॉल में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना Ajahn, we have a series of questions. Oh, from- we're online as well. Okay, okay. So we have a series of questions from a meditator in Bombay who is very ill and so couldn't come personally, and has sent a few questions to put to Ajahn Jayasaro on her behalf. Someone who's quite unwell, who's in Bombay, and has sent a series of questions for you. So the first question is, when objects arise, investigation is easier. In their absence, the mind simply remains in the silent, sky-like baseline because it does not know how to investigate further. What is this baseline and how should it be investigated? And I take, yeah, when from my, what I don't understand. So with the microphones for superior. Yes, I just repeated. Right. When objects arise, investigation is easier. In their absence, the mind simply remains in the silent, highlight baseline because it does not handle it. Okay. Well, it's not possible to spend the whole time investigating, or in terms of investigating the three characteristics, that the mind, just like the body, needs to alternate periods of rest and periods of work. And so as you know, when you've had enough sleep, you wake up, time to get up. And when you're working and you're tired, it's time to have a rest. And so the mind works on a similar basis. So sometimes the mind just needs to rest in that awareness, what you call like silent, sky-like awareness, and simply to be present there. Be present of the presence, if you like, or to know the knower. So this is not like a contemplation, it's simply a kind of a clarification or a recognition of what is present. So there's a wakefulness there. And then when something arises, then the mind has the energy and the ability to
reflect or to contemplate or investigation appropriately. The simile that Ajahn Chah gave, which I think is very helpful, is that of a spider. So the spider is at the center of the spider web and is still. And only when an insect becomes stuck on the web does the spider move towards and grab the insect and consume it, and then it returns to the stillness. And so don't worry about objects arising or don't arise, don't worry about investigating, just be sensitive to the needs of the mind. Sometimes the mind needs to rest in silence, and sometimes it's ready to do the work of investigation. Would you like to translate? Can you remember? So I said you don't need to investigate all the time. You just rest and a simile of, yeah, you can have a try. Okay, let us. संक्षिप्त में अजान कह रहे हैं कि अजान चा जो प्रश्न ये था कि भाई कई बार मन में विवेचन संभव नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं उठ रहा होता, तब क्या किया जाए, ये प्रश्न था। अजान का सवाल, अजान का जवाब, अजान चा की एक उपमा अजान चा दिया करते थे कि जैसे मकड़ी अपने जाल के बीच में बिल्कुल बैठी सतर्कता से स्थिर बैठती हैं, और जैसे ही कोई कीड़ा या कुछ भी जाल में आता है वो तुरंत लपक के उसको पकड़ लेती है। इसी तरह से आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही कुछ न कुछ विवेचन या विचार या प्रत्यावेक्षण के स्तर पे कुछ किया जाए। ये भी संभव है कि केवल सजगता सती बना के मन सतीवान रह सकता है, और फिर यदि कोई स्पष्ट विषय उठता है तो फिर उसको नोट किया जा सकता है। तो संक्षिप्त में अजान इस तरह से कह रहे हैं, हमें ऐसा भाव नहीं बनाना है कि हमेशा साधना में कोई ना कोई गतिविधि करते ही रहना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। मन केवल सजगता बना के स्थिर रह सकता है। So the second question is, the mind perceives that the sense of me manifests as conditioning, most strongly felt in the solar plexus area. It therefore uses this as the reference point for observation. Is this understanding correct? Ultimately, how should the mind let go of the reference point? Shall I answer before translate, or you want to? You want to see that? हाँ जी, तो प्रश्न है कि इनका मन ऐसा परसीव करता है, ऐसे सेंस करता है कि जो मैं हूँ, मैं सोलर प्लेक्सस एरिया में शरीर में हूँ, यहाँ पेट के एरिया में, और इसलिए जब भी वह कुछ ध्यान करते हैं तो यह उनका रेफरेंस पॉइंट या यह उनकी जैसे रूट है या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एक सही सोच है, और आगे चलकर कैसे मन इसको त्याग कर सकता है, इसको छोड़ सकता है। Yeah, I'm not completely sure that I understand what you mean by the sense of me manifests as conditioning. But anyway, I will answer as I can. I think it's common for awareness to be experienced in the different parts of the body which correspond to the yogic idea of chakras. This is also found in Vajrayana Buddhism. So some people just feel that this
this energy and this, what you call me, focuses here. And for some people, it's in the heart area. And some people, it's in this chakra, this area, solar plexus area. And there's nothing inherently correct or incorrect about that. It's just can be due to all kinds of reasons, physical reasons, or if you've formerly practiced yoga or one kind of meditation that stimulates these chakras, and awareness will tend to center there. So again, it's not a matter of letting go of a reference point. I think there will always be, except in jhana, then there will be some physical correlate or physical expression of the internal experience, and it's simply a matter of recognizing it. There is sensation. There is this here. It's like this, and that's as far as you go. It's like this. Right now, it's like this, and even this very kind of sophisticated investigation of me, the conditioning of me and the location of me and the separation of awareness and the object of all this stuff is really an advanced form of doubt. It's vicikiccha, and you don't have to go into all this. Really, just keep recognizing and being aware of the mind and body moment by moment, and whatever arises, then allowing it to arise and pass away according to its nature. So the me or mine that arises actually arises, I would say, after the phenomena. It's not as me or mine, but there is an appropriation of the phenomena after the phenomena. It's very, I mean, it's not like a heartbeat apart. I mean, it's almost instantaneous, but there is an experience and then an interpretation of the experience, or an attachment to the experience that follows from that. So simply being with the experience and not allowing that appropriation to take place is how practice develops. You got that? मैं कोशिश करता हूँ जो गुरुजी ने समझाया अभी अंग्रेजी में। तो एक उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार की कंडीशनिंग भी हो सकती है कि मैं इस शरीर में कहाँ हूँ, और यह भी हो सकता है कि जैसे योग में हमारे अलग चक्र हैं, तो जब हम ध्यान कर रहे हैं और जिन लोगों ने योगा करी है, तो उस हिसाब से उनके मन में ऐसा जाग सकता है कि मैं जैसे कि माथे पर हूँ या मैं किसी और चक्र के स्थान पर हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वहाँ ऐसी संवेदना है, ऐसी कोई सेंसेशन है जिसके माध्यम से हमें ऐसा लग रहा है कि मैं इस एरिया पर हूँ, यह मैं हूँ। और क्षण प्रति क्षण हमारा मन जो है अभी इस समय यह सोच रहा है कि मैं यहाँ हूँ, अभी यह सोच रहा है कि इस समय मैं यहाँ हूँ, और यह भी जैसे अराइज हो रहा है और पास हो रहा है, ये आ रहा है और ये जा रहा है। तो हमें बस ये जान सकते हैं कि हाँ, अभी इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ। फिर आगे जैसे हम बढ़ते हैं ध्यान में, जब हम ध्यान में जाते हैं तब यह मैं इस स्थान में हूँ यह फिर हट सकता है, और हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ पर आ रहा है। और यह एक गहरा प्रकार का डाउट या शंका, एक गहरे प्रकार की शंका है कि मैं यहाँ हूँ।
तो इसको हम ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने ध्यान पर आगे बढ़ते चलें। So I think that covers the other third question, and the fourth question. Again, there appears to be a separation between knowing and the known. Whenever the mind lets go of this apparent separation, it sinks into blankness. How should the mind proceed from here without losing clarity? Well, your object is clarity. That's the point. But the knowing and the known, we can say they are separate. Knowing, yes, a knowing arises and passes away. So we can presupposes a known, but the known arises and passes away. The knowing of it arises and passes away, and the tendency is to identify with the knowing. But when we see the knowing as arising and passing away, just as that which is known, then the wisdom develops more profoundly. But when there is nothing to investigate or nothing to know, as it were, then the challenge is to maintain that clarity and brightness of that knowing and not allow the dullness to take place. So this is developing the strength of the mind to be clear, independent of stimulation. Right. जो जानने की क्षमता है और जो जाना जा रहा है, इन पे सवाल इन पे था, और अजान ने इस पे टिप्पणी की। उसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो जानने की क्षमता है वो भी उदय और व्यय होती है, और जो जाना जा रहा है वो इस जानने की क्षमता के अनुसार उसके विषय बदलते रहते हैं, अलग अलग इंद्रियों के अनुसार, अलग अलग खास करके अलग अलग इंद्रियों के अनुसार। तो अजान इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो जानने की क्षमता है उसमें हम अपना ध्यान अगर स्थित रखते हैं तो जो अलग अलग चीज़ें बदल रही हैं, अगर इंद्रियों के माध्यम से बहुत कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी एक लगातार जानकारी बनी रह सकती है। उसमें वो सतर्क इस बात की तरफ हमें कर रहे हैं कि हमारी आदत ऐसी बनी हुई है कि लगातार कुछ न कुछ इंद्रियों पे चलता ही रहेगा। तो जो ध्यान है, मनसिकार जो है, वो लगातार किसी न किसी स्टिम्युलेशन की तरफ जाता ही रहता है। पर जब स्टिम्युलेशन नहीं हो रहा है, जो कि प्रश्न, तब भी सतर्कता कायम रहे, जानने की क्षमता में ध्यान अपना बना रहे, ये एक चैलेंज है। अक्सर ऐसी स्थिति में मन जो है वो आलस्य की तरफ, थिन मिद्द की तरफ चला जाता है। तो इतना हमें सतर्कता बनाए रखनी है कि जानकारी कायम रहे, बेशक अगर कोई इंद्रियों पे विषय नहीं भी उठ रहे हों। संक्षिप्त में ये बताया आजान ने। So when Luang Por Chah became seriously ill, and he left his monastery and went to escape all these visitors, to have a quieter rains retreat in a branch monastery. And some people found out where he was and went to see him. And one of these visitors said, "Oh, Luang Por, I heard you were so sick, and yet you look so as bright and radiant as ever. Are you really sick?"
And he said, yes. He said, but the difference between me and you know, people you're talking about generally is that people just see one side. When they're sick, they just want to get better. And so there's tension and fear that they're not going to get better, and anxiety and stress and so on. Whereas for me, I think if I get better, it's good. If I don't get better, it's okay. It's like either way, it's okay. So this person very sick and have asked me a very abstract question. So I can come down to earth a bit and sort of deal with, you know, it's a sense of if there's some threat to your life, how do you feel about that? And Ajahn Chah was saying, you know, you take the medicines and you follow the doctor's advice, and if you get better, it's good. But you're ready for the alternative. Maybe it won't get better, and then that way, that contentment and acceptance is where the peace will be found. And there can be, I think, no more foolish idea than, you know, the one that you come across in the West, like the battle against cancer or something like this. Somebody dies and their epitaph says, he lost his brave fight against cancer. How can that be a battle? You know, it's your own body. Cancer is just a development of cells in your body. You know, it's not an enemy to fight against. So apart from these very subtle investigations of the knower and the known and so on, this is important work, and you know, very pleased that you're on that level of practice. But at the same time, come down a bit and just, how do you feel about being ill? You know, what do you have, fears and anxieties, and are you at peace with it? How strongly, how important is it to you to get better? Are you at peace with the fact you might not get better? So these basic kinds of reflections should accompany this more profound investigations in meditation. तो जान कह रहे हैं कि एक स्तर पे इस प्रकार के सूक्ष्म साधना के विषयों में, जैसे कि जानकारी हो रही है, किसको जानकारी हो रही है, जानने की क्षमता, ये सब बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इसको और हम प्रत्यक्ष बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जब अजान चा काफ़ी बीमार हो गए थे, ये 1980 के दशक के बीच की बात होगी, तो तब वो आराम के लिए एक अपनी शाखा में चले गए, और शाखा में उनसे कोई मिलने आया, जिसने अजान चा को कहा कि भाई, मैंने तो सुना आप बीमार हैं, लेकिन आपके चेहरे पे तो इतनी आभा है, ये कैसे हो सकता है? और अजान चा ने कहा कि भाई, अक्सर जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, उनको ये चिंता होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या होगा, ऐसी चिंताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन मेरा रवैया ये है कि मुझे कुछ हुआ है, दवाई ली है मैंने, अगर उससे अगर सेहत बेहतर होगी तो भी ठीक है, नहीं बेहतर होगी तो भी ठीक है। तो किसी एक खास आउटकम से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ये उन्होंने समझाया। तो इस प्रकार की जब हमारे में एक संतोष का भाव होता है, एक एक्सेप्टेंस का भाव होता है, तो उससे ये एक शांति बनी रहती है। फिर आगे अजान ने कहा, तो ये अजान चा का उन्होंने उदाहरण दिया। फिर उन्होंने कहा, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई वो कैंसर से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अजान कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर तो केवल अपने शरीर का एक स्वभाव है, शरीर के खुद के जो सेल्स हैं वो एक प्रकार से बढ़ रहे हैं, उसमें जूझने और संघर्ष की क्या बात है? वो कोई एक तरीके से कोई दुश्मन थोड़ा ही है, केवल एक प्रकृति का स्वभाव है। तो इसीलिए संक्षिप्त में वो हमें या जो भी प्रश्नकर्ता हैं उनको प्रोत्साहन ये दे रहे हैं कि सूक्ष्म
प्रश्नों के साथ साथ, सूक्ष्म साधना के साथ साथ उसको प्रत्यक्ष अपनी जो वर्तमान की परिस्थिति है उस पर भी ला सकते हैं। कि उदाहरण के तौर पे एक कोई जो भी बीमारी से पीड़ित है, क्या ऐसा भाव है कि बीमारी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, क्यों ठीक नहीं हो रही, ऐसी चिंता आशंका अगर बनी हुई है, कितनी आसक्ति है इस बात से कि भाई मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। तो इस प्रकार के भी अगर हम साधना में प्रश्न अपने आप से करेंगे तो शायद हमें और ज्यादा लाभ होगा उन सूक्ष्म प्रश्नों के अलावा। You want to ask something? जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनमें से कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और जो हॉल में बैठे हैं वो भी पूछ सकते हैं। Ajahn is happy to take questions both from the online audience as well as here in the hall. I had a Yeah, I had a question for Ajahn. I've heard that in the past, or maybe even today, you reduced the amount of sleep that you needed to very few hours in the day. Is there something that we as lay people can do to reduce our need for sleep as well? If, like, for example, I don't have a very hectic life as such, but I'm not aware of teaching that, but I'll answer anyway. I think I mean generally in forest monasteries we get up very early and go to bed quite late, and I think it's quite good to have a rest during the middle of the day. But my experience, and also your body changes as you get older, so but generally just like 20 minutes is a really good time for a midday rest. Like if you do like a corpse position, set your alarm clock, just totally relax for 20 minutes, and maybe you sleep, maybe you don't. Get up, have a shower, and you're ready to go for rest of the day. So of course, if you're in an office or you can't necessarily do that, but if you're at home and I think it works. But what I'm really advocating is listening to your body and experimenting to find out how much sleep you need. I mean, the author, 8 hours a day is what we're told the body needs. But I think that people's needs for sleep vary a lot from person to person, and even one person in different times in their life. So that's something you're just looking at, and then you should also be quite clear what are the symptoms of too little sleep and symptoms of too much sleep. And in forest monasteries, certainly when I was first there, there's a bit of kind of macho young man, I sleep less than you and I meditate more hours than you and that kind of thing. and so that's not, very, and I think I for many years I slept less than I needed, really. And I'm looking back and I don't think that, I don't think I would have done it like that before. Again, so when I left the monastery, and it's, as an abbot of a monastery, it's very difficult to get more than 4 hours a night's sleep because you're on tap basically from 3 a.m. to 11, something like that, to get everything done. And I just thought I'm just not going to even look at the clock. I'm just going to get up when I wake up and go to sleep when I feel tired. And so that's a luxury that, if you have something like this. And so
if I'm sleeping, because I know my body will between 4 and 5 hours sleep is actually, as I get older, that's about enough body for me now. So if I know if I go to sleep at 11, I'll wake up 3 to 4 p.m. at 4 a.m. That's okay. Or if I stay up late, then I'll wake up a bit later. Or if I'm really exhausted, I might go to sleep at 9 and get up at 1 or 2, or not really worried about the time. But if you find that when you're meditating, you're getting dull and sleepy, or just sort of dragging yourself around, and that's not a virtuous thing. It means you need a bit more sleep, and if you sleep too much, then you feel miserable and kind of irritable, and that's kind of unpleasant feeling also. So it's an observation of what your body needs, and हाँ, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की चेष्टा करता हूँ। तो मेरा प्रश्न था कि मैंने सुना है कि गुरुजी अपनी काफी कम सोते थे पहले दिनों में। अब मुझे मतलब अभी भी शायद सोते हैं या नहीं सोते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे सुना था। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि हम जैसे जो गृहवासी हैं, हमारे लिए कैसे हम अपनी नींद की जरूरत कम कर सकें। तो गुरुजी ने मेरे ख्याल से सबसे पहले ये कहा कि एज सच इनकी ये शिक्षा नहीं है कि आप लोगों को अपनी नींद की ज़रूरत कम करनी है। पर फिर भी उन्होंने कुछ शेयर किया। उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि अगर दोपहर को आप जैसे कि रेस्ट करना, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हर एक के शरीर के अनुसार लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं नींद की, और कितना उनको रेस्ट की ज़रूरत है। और जैसे कि दोपहर में उन्होंने देखा कि अब उनके शरीर के हिसाब से अगर वो 20 मिनट शवासन में लेट जाएं, तो जैसे अलार्म लगा दिया और 20 मिनट शवासन में रेस्ट कर लिया, अगर झपकी भी आ गई तो भी ठीक, तो फिर वो उठकर ताज़ा हो जाते थे, फ्रेश फील करते थे। और उससे उनका मिड डे, दोपहर की जो विश्राम की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि एक समय पर पहले जब वो एबट होते थे, मुख्य होते थे अपने मठ के, तो उस समय तो देखिए वो तो 3 बजे उठते हैं वहां पर और देर रात तक उनका चलता है। तो 3 से 11 बजे कभी भी कोई भी उनसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता था। तो उनको ऐसे नींद मतलब उनके फिर बचते ही थे 4 घंटे सोने के लिए। और एक ऐसा भी था कि हाँ मतलब अभी वो यंग थे और उनको ये था कि करना है, कम ही सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे, बाकियों से कम सोएंगे। और अब उन्हें लगता है कि अगर फिर वो पास्ट में जाएं तो फिर शायद ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं थी। So I mean, one thing I have said is that if you sleep 8 hours a day, by the time you're 60 years old, you've spent 20 years sleeping, like a third of your life. So you're only actually like 40 conscious years old. And so if you want a long life, sleep a little bit less. That will automatically extend your lifespan a bit. तो गुरुजी ने ये अभी बताया कि वो ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप 8 घंटे दिन में सोते हैं, मतलब 1/3 आपका जीवन सोने में ही चला गया। तो अगर जैसे कि आपकी 60 साल की उम्र है तो 20 साल तो आप सोते ही रह गए, और एक्चुअली आप सिर्फ 40 साल ही आपने जिया है। तो एक तरीका लंबा जीवन जीने का यह है कि अगर आप नींद कम कर दें तो उतने ही सालों में आप ज्यादा जीवन जी लेंगे, ऐसे भी ये बता रहे हैं। So, like the full moon of January, this is a bit later this year, but following that, there's 3 months of rains retreat. And that's a good time for lay Buddhists to take on some special practice, so that you kind of joining in the rains retreat of the monks.
And some lay people will maybe keep 8 precepts for the 3 months. Other people might simply abstain from evening meal, just keep that 6th precept and keep the one about not eating after lunch, and have or make some determination about how meditating every day or something. So make some kind of a vow and a special practice for that limited period. मैं सामने बैठा हूँ बुलाना में नाम बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि वर्षावास का जो समय है यह भी एक अच्छा समय है हम गृहवासियों को भिक्षुओं के साथ जुड़ने का और एक स्पेशल प्रयास करने का। तो जैसे कि कोई लोग ऐसे एक अधिष्ठान ले सकते हैं या एक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या चैलेंज ले सकते हैं कि हम शायद जैसे कि 6 प्रीसेप्ट्स लें, 6 शील, दोपहर के बाद ना भोजन करने का, जैसे कि, या हर दिन हम जरूर अपना ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे करके वर्षावास का समय एक अच्छा समय है जब हम ये एक्स्ट्रा ले सकते हैं। Or it might be not eating anything sweet for 3 months or 1 month, something that just did go against, your habit just a little bit. So at the afterwards you feel some sense of achievement. Okay. या ऐसा भी हो सकता है कि बस इन 3 महीने हम मीठा त्याग दें। जैसे कि ऐसी कोई चीज जिससे हमारी जो आदतें हैं उसको हम थोड़ा सा उसके अगेंस्ट जाएं, उसके खिलाफ थोड़ा सा जाएं। So coming back to the topic of sleep, maybe for 1 month, or we say that maybe you get up early than usual for 30 minutes and then make that extra meditation time. And then you can keep a diary and see whether, you feel that you really needed that sleep or that actually you feel really good. And so you found an extra 30 minutes for meditating every day. The important point is, pushing just a little bit, but not too much, because if you do too much, then you get the reaction. It's not sustainable. And तो फिर वापस नींद के टॉपिक पर आते हुए एक और अगर हम चाहें तो तरीका हो सकता है कि इस वर्षावास के दौरान हम सिर्फ 30 मिनट कम सोएंगे, जैसे कि 30 मिनट जल्दी उठ जाएं तो हमें ध्यान के लिए 30 मिनट और मिल गए। और ऐसे करके मतलब बस एक हल्का सा दबाव अपने आदतों के अगेंस्ट, आदतों के खिलाफ, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर से अगर करेंगे तो शायद बहुत जोर से रिस्पॉन्स भी आएगा और हम शायद असफल रहे। Ajahn, there are 2 questions on the internet. So we can invite first Dada to ask his question and after that Bhavna. So please unmute Nabarun and go ahead. Thank you, Lumpo. Wish I could be there in person to pay my respects. My question is, I was wondering, if you can give us some teachings and instruction on right speech, how to practice and protect right speech as a lay practitioner, particularly in a society where people are not that interested, or many people are not interested in Dhamma. Thank you. yes, I'd be very happy to do that, except it's quite, I think, need to say quite a lot on that. Then maybe we're supposed to have a break now. We have the break first and then I'll answer that question. Yeah. Okay, so we'll convene in about 15 minutes. Break was scheduled. So we'll have a break till 2:45 and then come back and take Dada's question first and then Bhavna's and any others. 15 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और फिर इकट्ठा होंगे। तो 2 सवाल इंटरनेट पे हैं और अगर फिर हॉल में कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Thank you, Ajahn. Okay.
Who do you think you are? Who are you to say what's right and what's wrong? What do you mean when you say right speech? Do you mean only Buddhists are right and everyone else is wrong? And well, as you know, the word right is translated from samma, but I'm returning to a point I've made earlier. The Buddhist teaching have to be seen within this context of this kind of holistic system. And so speech, has to be related to the goal of Buddhist practice, which is realization of liberation from all suffering. So right speech is that speech which is conducive towards growth on the path towards liberation. So we're not taking like a ethical stand based on some philosophy. We're saying that the kind of speech, which is based upon right view, right thought, the kind of speech which leads to right action and right livelihood and right mindfulness and all the way to liberation. So the area covered in the teachings on right speech, in particular, more or less cover the fourth precept, the fourth five precept. But I think we can observe, can't we, that it's possible to speak in a way that we know is not really very wholesome, but does not directly break a precept. And I'll give you an example. Let's say you know some secret, somebody's secret. They did something really bad sometime, and you kept this secret. And then one day you're very angry with this person and you want to hurt them. And so you reveal their secret. So are you breaking a precept, given that what you are telling people is true, it's not a lie, but you're telling the truth in order to hurt somebody? So this I think, example of what would be wrong speech. And wrong speech would be speech which comes from defilement and is aimed at some to hurt or to oppress or to get or to gain. So we could say defilement speech, in other words. Who's translating this? Okay, sorry, I'll try and I'll shorter chunks in future. तो प्रश्न था कि राइट स्पीच, सही वाणी, इसको हम वो पूछ रहे थे गुरुजी से कि उस पर कुछ थोड़ा हमें सीख दें। और ख़ास करके आजकल के ज़माने में जहाँ हम काम करते हैं या जिन लोगों से हम जुड़े हैं, हमें लगता है कि वो शायद इतना फॉलो नहीं करते हैं, तो हम कैसे इसको डेवलप करें। तो गुरुजी ने कहा कि लोग वैसे पूछ भी सकते हैं कि हम कौन होते हैं बोलने के लिए कि सही वाणी क्या है और गलत वाणी क्या है। और इसके लिए गुरुजी आते हैं, जो बुद्ध जी की शिक्षा है, एक होलिस्टिक सिस्टम, एक पूर्ण सीख है, जिसका गोल है, जिसका जो निब्बाण तक हमें ले जानी चाह रही है। तो जब हम निब्बाण तक पहुंचना चाह रहे हैं तो उस के लिए कैसी वाणी सही है, कैसी वाणी उचित है, जो हमें उस शिखर पर ले जाए, वह सही वाणी कहलाती है। तो इसके लिए जैसे कि सही सोच, राइट थॉट, या सही दृष्टि या सही दृष्टिकोण, राइट व्यू,
इनसे जब हमारी वाणी निकले और जो वाणी जो हम कहें वह हमें राइट एक्शन मतलब सही हम एक्शन लें और सही जीविका जिएं और ऐसे करके हमें आगे पूरे आर्य अष्टांगिक मार्ग को सपोर्ट करे, यह सही वाणी कहलाती है। फिर गुरुजी ने उदाहरण दिया कि चौथे शील को जो है झूठ ना बोलें, इसको भी तोड़ते हुए लोग गलत चीजें कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया जैसे कि किसी की सीक्रेट हमें पता है, किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, कुछ गलत चीज करी और हमने सीक्रेट रखी वो, पर जब हमें एक दिन बहुत क्रोध आया उन पर, तब हमने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए या अपना गेन करने के लिए कुछ हमें तो हमने फिर वो उनकी सीक्रेट बता दी दूसरों को। तो यह जो बातें हमने जो कही, फिर हालांकि वो चौथे शील को तोड़ते नहीं हैं, झूठ नहीं है, परंतु यह आती है डिफाइलमेंट से। यह है गलत मतलब हमारी जो भावना है मन में, वह एक शुद्ध भावना नहीं है जिससे ये स्पीच आई है, तो यह सही स्पीच नहीं कहलाएगी। इनको ये कहते हैं जैसे कि डिफाइलमेंट स्पीच। तो इन्होंने इतना अभी बताया राइट स्पीच के बारे में। With regard to the fourth precept, I feel that the practice of mindfulness in daily life is most basic level is the mindfulness of precepts. So the 5 precepts are the most important fundamental objects of mindfulness in daily life. तो गुरुजी बताते हैं कि माइंडफुलनेस सति जो हम अपने दिनचर्या में हम लाने की चेष्टा करते हैं, तो एक बहुत उसका सबसे पहला बेसिक फाउंडेशन यह है कि हम अपने 5 शीलों के प्रति अपनी सति जागरूक रखें। I think that the most difficult time to maintain mindfulness is during conversation. और सबसे कठिन समय अपने सती को जागरूक रखने का तब है जब हम लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। Because you don't have time to stop and consider. You're not in control of a conversation. There's a flow, and it can take you into areas you didn't expect it to go before. So there are so many challenges in maintaining awareness in a conversation. क्योंकि जब हम लोगों से बातें करते हैं तब हमारे पास रुकने का समय नहीं रहता है, एक फ्लो जैसा बना रहता है दोनों के बीच, तो हम इसलिए सती ज्यादा जागरूक नहीं कर पाते हैं। So if you take that 4th precept and you're keeping that in your mind, and it's right there in the forefront of your mind is no lying, no lying, then you will notice during the course of a conversation that will serve to illuminate the thinking in your mind and as to whether or not there is kusala or akusala in your mind. तो ऐसे ही जब आप बातें कर रहे हैं किसी से और आप अपने मन में बस वो चौथा शील रखें कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो बस इसी से ही जब आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, जब आपकी बातें होंगी, तो आपके मन में जैसे कि एक तेज होगा, एक लाइट होगी, ब्राइटनेस होगी, जिससे कि आपका कॉन्वर्सेशन भी, आपकी बातें जो हैं वह भी धम्म अनुसार, fair to say in line with Dhamma, a little more in line. Yeah. So excuse me, it's the same like in a meditation session.
Let's take your breath, that's your main object of meditation. And because you're trying to maintain the breath in awareness, it exposes or brings to light all the defilements, the hindrances, sensual desire and negativity and dullness and agitation. All these things become present to you as hindrances because you have this one thing that you're trying to keep your mind on. That's its function. And so if you have one thing being not lying, it doesn't just expose the intention to lie, but all kinds of other unwholesome intentions. तो जैसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने मन को सांस के प्रति मन का ध्यान सांस पर लगाते हैं, तो हम देखते हैं कैसे अलग अलग हमारे विकार जागते हैं अलग प्रकार के। तो वैसे ही जब हम लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, तब हमारे मन में ऐसे ही हम देख सकते हैं, हालांकि हमारा यह सोच है, हाँ झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं, लेकिन हमारे मन में क्या क्या विकार और जाग रहे हैं, यह भी फिर आगे हमारे सामने हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। So you might be talking about some event, and you may find that something you're not so proud of. You're reducing your responsibility for that. You know, it's like rather than you were the main actor, you were just bystander, or maybe you in something that's good, you exaggerate the part that you played. And so apart from lying, there is this kind of editing that goes on, and we're trying to take care of this image that we want to project to the people around us. तो जैसे कि अगर हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जैसे कि हमारी कोई जिम्मेदारी है और पर हम इतना निभाना नहीं चाह रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि किसी और पर लाद दें या अपना हम काम कम कर दें। या एक और उदाहरण गुरुजी ने दिया, जैसे कि हमने कुछ अच्छा किया है लेकिन बातों बातों में उसको ज्यादा बड़ा करके दिखाने की चेष्टा में है। तो जैसे कि हम यह जो एडिटिंग करते हैं, जो चीजें बदलते हैं अपनी वाणी में सच्चाई से, तो यह भी फिर हमारे सामने और आने लगेंगी। Another point is we've all had the experience where you want to say something. You're in a group of people, we're all talking, and you have something you really want to say, but you can't. There's somebody else that's talking, someone else has the microphone, and so you have to sit there with these words that you want to say. It's like inside you, you know, and you're waiting until you can speak those words. So that experience, you know, observe what that feels like when you're feeling these words inside you that you're not yet going to express. And why this is valuable is when we return to the Buddha's words on speech. For example, the teaching he gave his son, Rahula. He says, be conscious before you speak, while you're speaking, after you're speaking. But how do you do that? That's so difficult. How are you aware of your words before you speak? And this observing that phenomena when you have words that you want to say that you can't yet for some reason speak, and notice that, and then you can develop that as a practice of just knowing what it feels like to have these words and yet not yet express them. Because that's where you can make the decision whether or not to say those words or not. तो जैसे कि अगर हम एक ग्रुप में हैं और हम कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु माइक किसी और के पास है या हम कह नहीं पा रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं, तो हम जैसे कि एक वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कब हमें मौका मिलेगा बात करने का। तो यह भी एक जगह है जहां हम अपना ध्यान
रख सकते हैं कि क्या चल रहा है, ये कैसा हमें अभी लग रहा है। और जैसे बुद्ध जी ने अपने पुत्र राहुला को कहा कि जब भी कुछ कहना चाहें तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, और जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद हमने क्या कहा। तो यह उन्होंने शिक्षा दी थी अपने पुत्र को, राहुल को। और फिर प्रश्न जागता है कि ये कैसे करें, पर ये जो इन्होंने शिक्षा दी कैसे हम अपने जिंदगी में लाएं। तो यह एक अवसर है जहां हम इस शिक्षा को ला सकते हैं, जब हम ऐसे ग्रुप में वेट कर रहे हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं हम। So when somebody asks you, especially if there's some more emotional conversation, and somebody asks you something, and there's no rule that says you have to respond immediately within half a second. Just 1 second is enough. Just take a breath and be aware of those words within you that want to be expressed. And you can make a decision. Yeah, maybe better not to say that. That's not going to help the situation at all. Or better say something else. But once you know that feeling of just holding words inside you, that's the step to having this awareness that will come to your aid and help in conversation, especially difficult conversation. तो जैसे कि अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और बहुत दिल की बातें निकल रही हैं, इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, और फिर कुछ हमसे कोई कुछ प्रश्न पूछे, कुछ हमें कहे, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें तुरंत ही जवाब देना है। हम 1 सेकंड वेट कर सकते हैं, हम एक सांस ले सकते हैं, और उस 1 सेकंड में या एक सांस में हम तय कर सकते हैं कि जो हम बोलना चाह रहे हैं, क्या ये वाकई एक इससे स्थिति इम्प्रूव होगी, बेटर होगी या नहीं। तो हम ऐसे इसको अपने हम तोल सकते हैं उस 1 सेकंड में, एक सांस में, और फिर उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड कर सकते हैं जो हम बोलने वाले हैं कि इससे इस स्थिति में मदद होने वाली है या नहीं, और यह हमें स्पीच में इम्प्रूवमेंट होगी। So some other things to be mindful of, like your posture when you're speaking. That we know that now that communication is not restricted to the content of your words, but that other non-verbal factors play an important part in deciding whether you communicate well or you don't. And physical posture is one, and one that most people will miss is tone of voice. And so if you had that experience of being very well intentioned and giving some feedback and very important, useful feedback, and yet being rejected and not being able to understand why does this person not listen? And often the tone of voice is not in harmony with the words, or creates a sense of aggression or judgment that the other person finds hard to accept, and may mean that they cannot hear your logic and your good advice, because it's not being presented in a way that person can hear. तो जैसे कि अब आज हम सीखते हैं कि सिर्फ शब्द ही नहीं, पर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हमारा शरीर कैसा है, हमारा पोस्चर कैसा है,
यह भी सब मिलकर फिर लोगों को हम जो कहना चाह रहे हैं वो उसको पूरी तरह से रिसीव करते हैं, पूरी तरह से वो लेते हैं। तो एक चीज है जो हमारे बोलने का जो टोन है, जो लहजा लहजा है, सुर है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है सुनने वाले पर। कि क्योंकि हो सकता है कि हमारी सोच सही है, हमारा इंटेंशन सही है, और हम जो कह रहे हैं उससे उनका बहुत फायदा भी हो, परंतु हम देखते हैं कभी कभी सुनने वाला वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो अक्सर यह हमारा जो सुर है, हमारा जो लहजा है बोलने का, उससे लोगों को वो जज कर लेते हैं कि नहीं, ये तो हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं, या ये शायद अग्रेशन या क्रोध के साथ बोल रहे हैं। तो फिर वहां उनका सुनना बंद हो जाता है, वो सुन नहीं पाते हैं। और इसलिए हम जो शब्द कहना चाह रहे हैं वो तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारा तरीका है आगे रखने का उनका, वो गलत हो सकता है। Another very important factor is time and place. If you want to have a useful conversation, then you should consider beforehand, is this something that's better spoken privately, or maybe if it's some very difficult emotional issue, then maybe it'd be good to have another person, like a neutral person present. Or is it something it would be better to speak of in a group? So, and when is the best time? If you're very tired and end of a long day and someone wants to talk about something important, you're just not in the right space. You don't just, it's not a time when you really want to be talking about these things. You need just to, have a shower and change your clothes, or, have a rest and find a better time and place. So these are these are considerations. We don't find these in the explanation of the Eightfold Path in the Tipitaka, but when we take this concept of right speech and we go beyond precepts, we go into good communication skills and how do we use our speech in the most constructive way. तो फिर सही समय और सही जगह, यह भी दो जरूरी महत्वपूर्ण चीजें हैं सही वाणी के लिए। जैसे कि हमें क्या अकेले में यह बात करनी चाहिए, या अगर बहुत ही लोग तनाव से भरे हैं, क्या शायद एक और जो न्यूट्रल पर्सन है उसको भी साथ में रख के हमें ये बातें करनी चाहिए, या क्या ये ग्रुप में बात करें तो ज्यादा बेटर है। तो हमें यह एक समझना चाहिए। और जैसे कि अगर हम थके हों और कोई कुछ कह रहा है लेकिन अभी हम अच्छी तरह से सोच नहीं पा रहे हैं, हम थोड़ा विश्राम कर ले फिर हम उनसे बात करें, अगर यह ज़्यादा उचित है। तो ऐसे करके हमें समय और जगह भी सोचनी चाहिए। और अब हम सिर्फ आर्य अष्टांगिक मार्ग या सिर्फ शील के बारे में ही नहीं, लेकिन गुड कम्युनिकेशन, बात करने का बहुत ही उचित तौर तरीका, इस पर अब हम आ रहे हैं। Yeah, maybe enough for one question. अभी इस प्रश्न के लिए इतना ठीक रहेगा। Okay. Okay, Ajahn. Bhavna, if you'd like to unmute and go ahead and ask your question. भंटे जी, ऑन बिहाफ ऑफ भावना मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो शायद अभी बात नहीं कर पा रही है, शायद किसी और उसमें ऑक्यूपाइड है। सो भावना जी हैज रिटन दैट requesting Ajahn to kindly share his daily routine, especially from the perspective of the meditation and practice. Sorry, I didn't. Daily routine from the perspective of meditation and practice. My daily routine. Oh, that's not very interesting. My daily routine varies according to what's going on in my life. So I don't even, now, in fact, I've just written a daily, so go yellow page
teaching started first thing this morning, like 3 o'clock this morning, and talking about monasteries and repetitive routine, where you do the same thing again and again and again at the same time, and why things are done in that way. And first of all, that it just produces a sense of calm and order in a community where, you know, at this time we do this, we have Bindabat is this time, arms around this, we have the meal at this time, we do this. It's just a sense of calm that comes. And also, you don't have to be thinking of what time should we have the meal today? Should we have a meal at 9 o'clock or 10 o'clock or 11 o'clock, or what should we do? When should we? So it takes away a lot of unnecessary thinking. But the important thing, I think perhaps the most important thing, is that when you have this repetitive rhythm, this doing the same things at the same time every day, you have wonderful opportunity to observe your mind and how it varies from day to day. So you hear a sound, maybe it's the sound for morning chanting, and most days I hope you feel like enthusiasm, but some days you kind of feel okay, you know, and some days maybe you just don't want to get up, and all the different features of the day are bringing up different feelings and perceptions, and seeing how these feelings and perceptions, reactions vary, although the stimuli, the cause for them is stable. And this is really helpful for understanding how we create suffering out of daily life and how the mind works, basically. So when I was in monastery, then mostly we'd have quite stable routines, so there would be occasional changes, so you'll get stuck. But for many years now, I've been living alone, so my daily schedule is not like a fixed one, and some days I might do a lot of walking, and some days very little walking, and some days some writing, and some days no writing, and some days more sitting, and some days less sitting. So I can't really say I do this every day these days. And there are, you become more senior monk, then it's more work basically than when it's the opposite of lay life. Whereas you get older, you can just sort of wind down. Whereas as senior monk, it's the opposite. It's more work. So some days then I'm usually at my hermitage, but then there are days where I have invitations or duties, responsibilities to the Sangha, or recently the king's daughter passed away, and so I was required to go to Bangkok and participate in ceremonies related to that. And so things like this, when you're a senior monk, will come up. And so I think maybe what you're interested in now is like, how much time do monks spend on formal meditation practice and that kind of interest. My advice to younger monks is
if there's not some special project going on in the monastery, and sometimes there is, maybe 6 hours a day is a good standard, meaning like 2 hours in the morning, 2 hours during the day, and 2 hours at night time. And you fit that in, and whether it's sitting or walking, and that's for a monk, that should be feasible and practical. तो प्रश्न था कि गुरुजी का डेली रूटीन, इनकी दिनचर्या कैसी है ध्यान और प्रैक्टिस की। तो गुरुजी ने सबसे पहले ये कहा कि ये काफी बदलती है दिन पर दिन, क्या चल रहा है उस पर निर्भर होकर। और इन्होंने इत्तेफाक से अभी ही एक येलो पेज टीचिंग ये अपनी व्हाट्सएप पर भेजते हैं, अंग्रेजी में एक येलो पेज जिसमें वो अपनी सीख शेयर करते हैं सबके साथ। तो उसमें वो यही बता रहे थे कि जैसे अलग अलग मठ हैं और वहाँ पर उनका जो हर दिन उनकी सेम दिनचर्या रहती है। और इससे काफ़ी फायदा होता है पूरे ग्रुप में, जैसे कि एक ऑर्डर रहता है और शांति रहती है। हमें ये नहीं सोचना है कि कब भोजन करें कब भोजन ना करें, अब करें बाद में करें। तो बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी रूटीन पर सब चल रहा है। और ये भी देखने को मिलता है फिर कि हमारा मन दिन पर दिन, हर सुबह हम वही चांटिंग के लिए हमें जाना है, लेकिन किसी दिन हमें बहुत जोश है और किसी दिन हमें मन कर रहा है कि बिस्तर में ही लेटे रहें। तो कुछ बाहर तो बदला नहीं, लेकिन अंदर ही जैसे हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो यह हम देख सकते हैं कि हम अपना दुख खुद ही पैदा कर रहे हैं। अब गुरुजी फिर बताते हैं कि अब तो वो अकेले ही रहते हैं और तो इनकी दिनचर्या बदलती है दिन पर दिन। किसी दिन ज़्यादा यह चलेंगे, किसी दिन ज़्यादा लिखेंगे, किसी दिन ज़्यादा बैठ कर ध्यान करेंगे। तो इनका दिन पर दिन बदलता है। और वो यह भी बता रहे थे जैसे सीनियर होते हैं, सीनियर भिक्षु बनते हैं, तो और ज़्यादा इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा इनकी ड्यूटी बढ़ती है। जब हम गृहवासी होते हैं तब जैसे हम सीनियर होते हैं फिर तो हम रिटायर ही हो जाते हैं और हमारी तो कम हो जाती हैं ड्यूटियां, बट इनके विपरीत है इनकी स्थिति। तो जैसे कि अभी इनकी जो प्रिंसेस राजकुमारी हैं थाईलैंड की, वह गुजर गई, तो फिर उनको बैंकॉक में जाकर कुछ उनके लिए चांटिंग और वो सब करना था। तो यह एक उदाहरण दिया उन्होंने। और फिर वो कह रहे थे जो नए भिक्षु बनते हैं उनको जैसे कि यह एडवाइस करते हैं कि उन्हें दिन में यह चेष्टा कर सकते हैं कि 6 घंटे ध्यान करें, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, और बैठकर ध्यान करें, चलकर ध्यान करें। ऐसी वो उनको गाइडेंस देते हैं, जनरल गाइडेंस। Ajahn, from Bombay, you will remember Surendarji, the Sikh gentleman who had done that interview with you. So he's online and he'd like to ask a question. Surendarji, please go ahead, unmute and ask. Amit, शायद देखना पड़ेगा आपको। Namaste, am I audible? जी जी। Just Surinder? Salutations, how are Yes. you doing? How are you, sir? Am I audible? Yes, good afternoon. Good afternoon. Once you had mentioned about being mindful of before every sitting on a daily basis, we should know why we are sitting and what are we out to do. Can you throw some light on what that means, and on a daily basis, what should be one aware of before one begins the sitting? You said we should be mindful. It seems you must have mentioned at some point that before we start a formal session, to try and establish mindfulness, to try and determine what you're sitting for. Yeah, He's okay. asking what did you mean when you said? Yeah, sorry. Um, so as in any kind of
activity or journey, the first step is crucial. And every time we come to the meditation mat, we sit down, we bring in different things to it, in terms of our physical health, our mental state, and before we begin to focus on our meditation object, we want to make sure that our body and mind are in the most conducive state possible. तो प्रश्न था कि गुरुजी ने पहले एक सीख दी थी कि जब हम ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो उस समय हमें सती जागरूक करनी चाहिए कि हम क्यों ध्यान पे बैठ रहे हैं। तो सुरेंद्र जी मुंबई से ये पूछ रहे थे कि गुरुजी इस पर थोड़ी और रोशनी शेयर करें, थोड़ा और लाइट लगाएं कि क्या हम ये कैसे और डेवलप कर सकते हैं। तो गुरुजी ने शेयर किया कि हमारे दिन, हम जैसे कि एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो हमारी हर हर कदम जरूरी है, हर एक्टिविटी जरूरी है। और जब हम जैसे ध्यान पर हम आ रहे हैं, हम अपने मैट पर बैठ रहे हैं तो हम अपने साथ अलग अलग चीज़ें लाते हैं, जैसे कि हमारी शारीरिक हेल्थ कैसी है या हमारे मानसिक स्थिति कैसी है। तो हमें यह चेष्टा करनी है कि यह ध्यान के लिए एक कंड्यूसिव स्टेट, एक अच्छी स्थिति पर आ जाए ताकि फिर हम ध्यान शुरू कर पाए। So if we begin at the most basic level, if you have some concern, some worry in your mind when you sit down, it might be some family matter, it might be something to do with your work and your career or whatever, and you've been worrying about this throughout the day. That's not going to disappear just because you close your eyes and you put your mind on a meditation object. But what you can do is, before you start to meditate, you say, like this period, 30 minutes or whatever, 1 hour, whatever, I'm not going to go over that matter at all. Now, that just thinking that or making that determination is also not going to prevent that kind of thinking from appearing in your mind, because there's a momentum there you've built up. But what it does mean is you'll be instantly aware of it as something that you just decided not to think about. And so that will find it much easier to let go of that in the meditation. तो एक बेसिक लेवल पर गुरुजी ने बताया एक उदाहरण कि जैसे कि हम दिन भर अगर किसी पारिवारिक या काम से रिलेटेड चीज़ को लेकर अपने मन में काफ़ी वरी में है, काफ़ी टेंशन में है, तो हाँ, यह तो है कि जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो वो ऐसे ही नहीं हट जाएगी। वो ऐसे ही, मतलब कि ध्यान के लिए बैठे तो अब वो बस बंद हो जाएगा, ऐसे सोचना ऐसे तो नहीं होने वाला है। पर ध्यान के पहले हम अपने मन को यह कह सकते हैं कि ध्यान के दौरान वो जो 30 मिनट है या 1 घंटा, जितना भी समय, उस समय हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम ये ऐसे अपने मन को बता सकते हैं। अब यह भी है कि ऐसे मन को बताने से वह बात फिर भी आ सकती है हमारे मन में, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने दिन भर उसके बारे में सोचा है तो उसका एक मोमेंटम है, उसकी एक अपनी गति है। तो पर जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो आप तुरंत पकड़ना शुरू कर लेंगे कि अरे ये फिर आ गया, ऐसे आप उसको और जल्दी पकड़ने लगेंगे। और इसलिए आप में वो क्षमता भी बन सकती है कि आप और उसको आसानी से छोड़ भी सकते हैं उस बात को। A very traditional way of beginning would be just through chanting the words of refuge, or perhaps the Itipiso formula, just as a way of
getting on track and like a sort of a preliminary focus. तो एक बेसिक तरीका है कि आप चांटिंग कर सकते हैं ध्यान के दौरान। आप बुद्ध धम्म संघ की शरण की चांटिंग कर सकते हैं, यह एक तरीका है। और आप एक जो इतिपिसो चांटिंग है, इतिपिसो भगवा अरहं, यह भी आप चांट कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीका है चांटिंग का, अपने मन को शांत करने का। Another option or something also you can do is just to recall and repeat to yourself the reasons why you're meditating in the first place, and the recognition that as suffering is dependent upon defilement, and as defilement will not disappear from the mind spontaneously by itself, but only through training, then the only path to liberation is through training the mind. And this is what I am doing right now. और एक और तरीका है कि हम मन में यह सती बार बार, एक स्मृति बार बार जगाएं और रिपीट करें कि हम ध्यान के लिए क्यों बैठे हैं। यह हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यह हम अपने मन में ला सकते हैं। और हम यह समझ है अब हमें कि जो हम दुख झेल रहे हैं वह हमारे खुद के ही विकारों की वजह से प्रकट हो रहा है। और यह विकार जो हैं ये ऐसे चुटकी में तो नहीं खत्म होने वाले हैं। तो इनको खत्म करने के लिए, ताकि हमारा दुख खत्म हो, तो हमें ट्रेन करना है अपने आप, हमें ट्रेनिंग करनी है। और यह ध्यान ही यह ट्रेनिंग है जिससे हम इन विकारों को फिर मिटा सकते हैं और अपना दुख हम हटा सकते हैं। यह स्मृति। So that's a kind of preliminary reflection which is emphasizing wisdom side, what is the reason, what is the purpose, the value of what I am doing right now. The other side is more devotional side. We bring to our mind maybe an image of the Buddha, or we recall some inspiring Dhamma teaching, or we maybe bring to mind some great teacher. So this brings a sense of uplift to our mind. And then we say, I want to offer this practice to the Buddha Dhamma Sangha. So the idea of meditation as an offering to the Buddha Dhamma Sangha is a very skillful way of thinking, and particularly because it takes away this sort of, I want to get this from meditation, or I want to get that. So you flip it over, it's an offering rather than something you are doing for yourself. तो यह अभी जो हमने सुना वह एक बुद्धि या विजडम, व्हाट इज विजडम इन हिंदी, प्रज्ञा का एक तरीका है कि हम समझ रहे हैं कि हम क्यों ध्यान कर रहे हैं और इसका क्या, इससे हमें क्या मिलेगा। और एक और भी तरीका है जो श्रद्धा भाव वाला तरीका है, जिसमें जैसे हम बुद्ध जी का रूप अपने मन में ला सकते हैं, या हम कोई धम्म की सीख जो हमें कहीं से मिली है, या कोई हमारे धम्म के जो गुरु हैं उनकी हम सीख और उनकी बातें हम ला सकते हैं अपने मन में। और एक और है कि जब हम ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं कि यह जो मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ यह एक भेंट है, यह एक दान है बुद्ध जी के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। और तो हम दान भावना अपने में ज्यादा जगाएं, ना कि एक मैं अब ध्यान में बैठा हूं अब मुझे इस ध्यान से कुछ चाहिए, वह वैसी भावना नहीं। There's a few responses to your questions.
तो यह थे कुछ जवाब की So, Surinder, I'm not going, I think I told you, not going to Mumbai this trip. You're going straight to Aurangabad and then to Nagpur and Bangalore before returning to Bangkok. Yeah. Thank you, sir, for responding. Okay. And thank you for your answer. We shall wait for you when you come again Yeah. this year, hopefully. Yeah, next time in Mumbai. Yes, sir. Thank you so much. तो गुरुजी बता रहे हैं कि इस बार वह मुंबई नहीं जा पाएंगे, सुरेंद्र जी से नहीं मिल पाएंगे इस बार, और वो बाकी औरंगाबाद और बैंगलोर अलग शहर जा रहे हैं इस बार। शायद अगली बार हो पाएगा मुंबई का ट्रिप। सुरेंद्र जी ने एक्चुअली अजान का काफी लंबा एक इंटरव्यू किया था, आप सुन सकते हैं उनके चैनल पे। तो बहुत दिलचस्प इंटरव्यू सुरेंद्र जी करते रहते हैं। I'm just mentioning that he did this really long marathon interview with yourself. Surinder ji did this really long marathon interview with yourself. So I'm just mentioning that is available on his channel to watch. Okay. To listen to. Okay, Sumrit. Maybe Amit, we can have a grid so that we can see others also. Yeah, Sumrit, go ahead. Ajahn, my question is if you could reflect some more on Dhampad verse 137 to 138, which says that when you harm the harmless or offend the inoffensive, then you quickly soon fall into one of the 10 states like bodily injury or loss of property, loss of wealth, loss of relatives. So my question related to this is, does this relate to both verbal as well as physical harm or only physical harm? The reason I'm asking is because I had a very bad car accident in 2022, from which I'm recovering, trying to recover, but it's been very hard to diagnose. And prior to the accident, I ended up being angry at some people and cultivated some unwholesome speech. So my mind keeps on going into that, like, did I do those actions which brought me into such misfortune? So that was my question, like, and does that explain the tragedies that happen to people, like running into accidents, or because the verses say that you can even have your houses being burned by fire? Yeah, I think if you know, if getting angry with somebody and speaking harshly was sufficient cause for serious car accident, you know, the hospitals would be full to overflowing, and you know there'd be no able-bodied drivers left on the road. So I don't think it's sufficient cause for something like that, and I don't think it's a good way of thinking about it. Maybe in some sense it was contributory cause, but we just don't know. And I don't think it's very helpful in Dhamma practice to be dwelling on that now, other than to be supplementing the physical care, the medicine, the physiotherapy, or the other treatments that you're having, with keeping your mind as clear and wholesome as possible, and particularly to emphasize the Brahmavihara meditation and the Metta meditation, both for yourself and for other people. तो प्रश्न है कि धम्मपद 137 137 to 38, उसमें यह हमें सीख मिलती है कि जब हम किसी जो हार्मलेस लोग हैं, जो संत
की तरह या जो धार्मिक लोग हैं उनको अगर हम बुरी चीज़ें पहुंचाएं उनको शब्द के प्रति या किसी तरह से उनको ऑफेंड करें, हर्ट करें, तो इसका हमें जो खुद को हमें रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि हमें शारीरिक चोट पहुंचे या हमारा कुछ घर कुछ या ज़मीन कुछ डैमेज हो जाए या हमारे रिश्तेदारों को चोट पहुंचे या हमारे कुछ आग लग जाए, तो जो पूछ रहे थे वो बता रहे थे कि उनका खुद का एक बुरा एक्सीडेंट हुआ और बहुत मतलब उसका डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो पा रहा था कि क्या हुआ है, क्यों, मतलब कहाँ पर दिक्कत है। और वो कह रहे हैं कि कुछ समय पास्ट में उन्होंने कुछ गलत शब्द कहे थे, तो उनका यह प्रश्न है कि क्या यह उन बुरे शब्दों का यह रिजल्ट है कि उनको यह एक्सीडेंट हुआ और यह परेशानियां अभी झेल रहे हैं। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि अगर सिर्फ कठोर शब्द से हम हमारे ऐसे एक्सीडेंट होते तो अब तक तो अस्पताल सारे भर जाते और हमें कोई शायद ड्राइवर ही नहीं मिलता आजकल के ज़माने में, क्योंकि वेल, तो फिर उन्होंने कहा कि वह अकेला ही एक कारण शायद नहीं होगा, कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनके वजह से ये हुआ। परंतु वो ऐसे समझा रहे हैं कि अगर हम धम्मा प्रैक्टिस में हैं तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी उचित नहीं है। अब इनको ऐसे अपने ध्यान देना चाहिए कि वो ठीक से अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, अपना खुद का ध्यान रख रहे हैं और अपने चित्त को भी एक होलसम, एक कुशल स्थिति में रख रहे हैं। और इसके लिए जैसे कि ब्रह्म विहार, करुणा, मुदिता, मेत्ता और उपेक्षा, इनमें अपने मन को जैसे स्थित रखना और दूसरों के प्रति और अपने प्रति मैत्री भाव जागरूक रखना, ऐसे ये अपने आप का ध्यान रखें। So this is a slightly obscure question, Ajahn. I'll try and paraphrase it. These days, people interpret that whatever phenomena we experience in the present belongs to the past. Please explain about this, Banteji. I presume he's referring to causes for the present being in past action. Whatever we experience belongs to the past. Whatever phenomena we experience in the present belongs to the past. I mean, the English is slightly skewed there, but my Well, I always hesitate to be explaining the words of somebody else, but I think that the meaning here is that whenever something arises, and the knowledge of it, the knowing of it, very slightly succeeds the phenomena. Sometimes just maybe a fraction of a second, but in other words, that phenomena has already passed away. So it's the past. So the knowledge is always of something that has, strictly speaking, already passed, although the time that may be like a fraction of a second, but तो प्रश्न है कि इन्होंने सुना है कि आजकल एक सोच है कि जो भी हम अभी वर्तमान में हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम महसूस करते हैं, वह अतीत की बात है। तो गुरुजी कहते हैं कि वैसे वो दूसरों के शब्द समझाना मतलब ज्यादा उचित नहीं समझते हैं, पर वो इतना कह सकते हैं कि जब भी हम कुछ हमें कुछ समझ आती है, कुछ नॉलेज आती है, कुछ ज्ञान आता है,
तो जिस चीज पर वो निर्भर है, जिससे हमें वो समझ आई, जानकारी आई, वह ऑलरेडी अतीत में चला गया है। तो हो सकता है बस कुछ क्षण ही बीते हों, हो सकता है बहुत ही आधा सेकंड, बहुत ही छोटा ही समय बीता हो, पर जो भी हमने अभी महसूस किया है, समझा है, वह ऑलरेडी, वो घटना अतीत में चली गई है। Okay, so जो हाथ थे ऊपर, the questions have, we've gone through all the questions. So if there's anything else, we can take it now. Otherwise, invite Ajahn to take a break, rest a while. Yeah. हाँ जी, सौरभ। मेरा प्रश्न था ये गुरुजी, भाई हमारा जीवन कर्मों के आधार पर ही आधारित होता है या किस्मत भी कोई ऐसी चीज होती है जीवन में? किस्मत मतलब So, Guruji, the question is that is our life completely dependent on karma, or is there anything like good fortune or luck? Well, this is one of the key features of Buddha Dhamma, and the Buddha criticized on many occasions the idea that everything is the result of karma. And he said if that was the case, there could be no Eightfold Path. There could be no role for effort. And so he criticized, this view of karmic determinism, that everything is already decided, already fated. He rejected the view that what happens is the will of a god or some god figure. And he rejected the view that everything is random without any kind of causal process. तो गुरुजी बताते हैं कि यह बुद्ध जी की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण फीचर है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बुद्ध जी यह स्पष्ट तरह से समझाते हैं, भगवान बुद्ध, कि हर चीज हमारे जिंदगी में कर्म के द्वारा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर कोई आर्य अष्टांगिक मार्ग जो हमें निब्बान के प्रति ले जाए, या हमारे खुद की एफर्ट से, हमारे बल से हम कहीं कुछ पहुंच पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसलिए ऐसे कि कर्म के आधार पर ही सब होता है, और या हमारा जो फ्यूचर है, नियति वो नियति के आधार पे है, मुकद्दर के आधार पे है। नियति के आधार पर, मुकद्दर के, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। फेट जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब भगवान ने कहा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल मतलब इत्तेफाक से ही सब चीज हो रही है, बिना किसी कारण के। तो ऐसे बुद्ध जी यह कहते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं। So I think we can draw a parallel to the scientific consensus on the relative importance of genetics and environment. So the consensus these days is roughly 50-50. So our life of 50% depend on our genetics and 50% on how we live our lives or our surroundings. And I think that, roughly speaking, we can say that our life is like at least 50% depending on old past karma, and then up to 50% by what we make of our past karma. तो एक वैज्ञान के तौर पर हम एक पैरेलल देख सकते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं उसे वैज्ञान के तौर पर, कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जीवन जो है
50% जैसे कि हमारे जेनेटिक्स या जो हमारे माता पिता से हमें जो मिला है, जो जीन्स मिली हैं, उस पर निर्भर है। और आधा हम किस परिस्थिति में हम हैं, जो एनवायरनमेंट है हमारे अराउंड, हमारे चारों तरफ, उस पर निर्भर है। तो धम्म के तौर पर हम कह सकते हैं कि 50% हमारा जो जीवन है वह है पुराने कर्मों के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, और 50% हम उन पुराने कर्मों के साथ जो भी परिस्थितियों पर हम आए हैं उनके साथ हम आगे क्या कर रहे हैं, हम कैसा अपना बल लगा रहे हैं, हम कहाँ अपना एफर्ट डाल रहे हैं, उसके आधार पर है। But we can imagine a situation in a slum where someone's been reborn into a very difficult environment. And let's say our test case with 10 young people living together in the same environment. And if environment or our karma was destiny, if those 10 boys were all invited to become criminals or drug dealers, all 10 would become that. But in fact, it's not. You may have some and some don't, and some go on to different lives. So it means that you have like a loaded dice. You know, some things are easier than others, and some things are require some willpower or some other factors involved. But we are not simply the result of the past or the situation. तो उदाहरण के तौर पर गुरुजी बताते हैं, जैसे कि अगर बस्ती में अब हम देखें कोई गरीब लोग रह रहे हैं और उनमें से अगर हम 10 लोगों को लें, 10 युवाओं को लें, तो और उन सबको वही अवसर मिलता है कोई गलत काम करने का, कोई चोरी या कुछ ड्रग्स या कुछ ऐसा गलत काम करने का। लेकिन हम देखेंगे कि वो 10 अगर सब सच में हमारे कर्म के पर ही आधारित है और इसलिए वो उस बस्ती में पैदा हुए हैं, तो 10 फिर वैसे ही ड्रग्स में या गलत काम में लग जाते हैं। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो जैसे कि यह डाइस, जैसे हम लूडो खेलते हैं वो डाइस के साथ, अब क्या बताएं। तो डाइस जैसे कि हमारी गिट्टी, पासा, थैंक यू। हमारी हिंदी भी थोड़ी कच्ची है। So, you know, like when they cheat, they put the weight in the dice, so it comes down. So it's like you're playing against yeah, you've got that. तो जैसे कि गिट्टी में कुछ ऐसा भार है कि वो एक तरफ कुछ नंबरों पर ज्यादा गिरेगी, तो ऐसा ही है। और जैसे कि हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है, जो हमारी विल पावर है, और ऐसे ही कुछ अलग अलग ऐसे हमारे बल या कुछ ऐसे अलग चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। But let's bring it sort of closer to home. If you when we're in the world and there are pressures and there are temptation, and if you have never trained your mind, then the stimulus, whether it's a pressure or a temptation, will tend to result in immediate reaction. And that reaction will usually be one which is based on defilement and lead to suffering. But if you develop mindfulness practice, you create a space between the stimulus and the reaction. And in fact, the reaction now becomes response. So the same external environment, but the person with mindfulness is able to be present and then to say, no, I won't do that. It would betray my principles.
or it would be bad karma. So from Buddha's point of view, we have a capacity to transcend the negative karma we have accumulated or inherited. But the degree to which we do that is dependent on how well we train ourselves with the Buddha's teaching. तो गुरुजी समझा रहे हैं अब, और जैसे कि हम अपने पास ले आए एक उदाहरण। तो जैसे कि हमारे सांसारिक जीवन में कभी कोई हम पर प्रेशर आता है, कभी हमें कुछ लगता है कि प्रलोभ आ जाता है, और हमें लगता है, मतलब, तो ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि तुरंत ये ले लो, इसका हम फायदा तुरंत उठा लें, यह जो हमारे सामने आया है। और हो सकता है कि वो ग्रीड से, लालच से या कुछ ऐसी चीज से वो हम प्रभावित हो जाएं, ऐसा रिएक्ट करें। लेकिन क्योंकि अब हम ध्यान की शिक्षा, हम ध्यान कर रहे हैं और अपनी सती, अपनी सजगता जगा रहे हैं, तो अब हम एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एक जैसे कि वह घटना घटी, लेकिन हम तुरंत, हमें उस लालच पर हमें नहीं एक्ट करने की जरूरत है। हम एक रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं कि हम कैसे उस पर, हम कैसे वापस हम रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। और हम वर्तमान में रहते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं हम कि नहीं, हम ये नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे जो हमारे आत्म नियम है, जो हम हमारे प्रिंसिपल्स हैं, या हमें लग रहा है ये गलत बुरा कर्म है, तो हम नहीं करना चाहते हैं। तो हमें वह क्षमता अब बढ़ती चली जाएगी, और इसलिए इस क्षमता के बल पर हम अपने आप को आगे चलकर बुरे कर्मों से बचा सकते हैं। और हम जितना हम अपने आप में यह बल बढ़ाएंगे ट्रेनिंग करके, उतना हमें एक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। Just one more point that you asked about. If you listen or read the words of people who become very, very rich, like this Bill Gates, or so these people. Warren Buffett is a good example. He speak very well about how he got so wealthy. And what you hear again and again is, I was in the right place at the right time. So we could call that luck, but what is luck exactly? And I think we can, from Buddhist point of view, we can say this accumulated good karma, that you are there at that time. Like for Bill Gates, he happened to be enrolled in a school at a year when the revolution in personal computer just took place, and the head teacher opened up a basement and bought all these computers and said the students can use them 24/7. So right at that crucial period in the development of personal computer, there was this bright young man who obviously very smart, but he had 24/7 access to computers. So he had a huge advantage over so many people. So there is this mixture of personal effort and luck, good luck or bad luck, and environment, and these accumulations from the past. But at the end is what you make of them, which is the most important factor. तो जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, कोई लोग जो बहुत अपने जिंदगी में सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत अमीर हुए हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट या बिल गेट्स। तो हम जब पढ़ते हैं उनके बारे में, तो हम अक्सर देखते हैं कि वह सही जगह सही समय पर थे, और उसका उन्होंने उन्हें फायदा मिला। और कई लोग कहेंगे वो तो बड़े लकी थे, उनकी वो सही जगह वैसे थे। पर अगर हम बुद्ध जी की शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें,
तो हम यह भी सोच सकते हैं कि यह उनके जो अच्छे कर्म थे, वह कर्म उनके इस पॉइंट पर उनको लेकर आए। और एक उदाहरण के तौर पर गुरुजी ने कहा कि बिल गेट्स जो थे, वह एक स्कूल में पढ़ रहे थे जहां पर, और ऐसे समय पर थे जब कंप्यूटर्स बिल्कुल ही रेडी थे, मतलब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी वैसे बन ही रही थी कि अब घरों पर डेस्क पर ऐसे फिट हो सके। और जो उनके जो मेन प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पूरा अपना खोल दिया एक फ्लोर और कंप्यूटर से भर दिया, और अपने जो विद्यार्थी थे उन्हें कहा कि आप 24 घंटे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ऐसी उनको ऐसा मौका मिला, समय भी सही था और जगह भी सही थी, तो उनको एक बहुत ही बड़ा मौका मिला। और फिर बिल्कुल उन्होंने उस पर फिर अपने लगन से, अपने परिश्रम से और उस पर मेहनत करी। तो दोनों ही लक, या जैसे कम और भाग्य, हाँ जी, और उनका जो उन्होंने एफर्ट लगाया उस पर, जो अपना बल So, लगाया। so if you become a monk and then maybe in 30 years' time they say, how did you become such a great monk? And you say, oh, I was in the right place at the right time 30 years ago. तो जैसे कि अगर आप भिक्षु बने 30 साल पहले, और फिर लोग कहते हैं कि आप इतने अच्छे भिक्षु हैं, कैसे इतने अच्छे भिक्षु बने आप, तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, हम सही जगह थे और सही समय भी सही था। Okay, I think maybe then. Okay. So अब जो online audience है, we'll say bye to them, because evening we'll go off to the old monastery most likely, and then tomorrow morning, after a little round of the monastery and after breakfast, Ajahn will leave for Delhi. So can express our gratitude, and of course the people here will still get to meet him. But for those of you joining on Zoom, thank you, and hopefully it's been helpful. Okay. Yeah. Lay people come back. अच्छा, आप लोग कर ले, आजान को नमन कर ले. You can read it. जान को हम आदरणीय भिक्षु लोगों को 3 बार नमन करेंगे. प्रथम नमन, द्वितीय नमन, तृतीय नमन.